different phases of dysphagia. हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ग्लोबस और डिस्फेजिया के डिफरेंस के बारे में. कोई है जो बता सकता है रैंडमली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबस एंड डिस्फेजिया? बोलिए आप लोग. कोई रैंडम नहीं सर. तो ग्लोबस सेंसेशन होती है rather than actual dysphagia. Dysphagia is actually difficulty in swallowing. तो इनकी तरफ से क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन है आपको? इन्वेस्टिगेशंस बता सकते हैं स्टूडेंट्स क्या क्या इन्वेस्टिगेशन? समबडी कम्स विद डिस्फेजिया, कौन कौन किस तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं? हाउ डू वी इन्वेस्टिगेट? इन्वेस्टिगेशन बताइए, कंट्रीब्यूट करें आप लोग. बोलेंगे. जी सरोज बोलिए. जी मैम, इसमें बेरियम स्वैलो स्टडी होती है सर, और मिक्सचर विद कॉन्ट्रास्ट मटेरियल डायनामिक स्वैलोइंग स्टडी होती है, या ये एंडोस्कोपी और मैनोमेट्री. ठीक है, तो बेरियम और कंट्रास्ट स्टडी आर सिमिलर, एक ही चीज़ होती है, फॉलोड बाय endoscopy and ergoscopic examination. So history, physical examination, bedsides followed by endoscopic evaluation or contrast evaluation. History for neurological disorders and history and physical examination. Strokes, main neuromuscular disorders, dysphagia, or whether you can examine patient for any limb weakness or speech dysarthria, dysphagia. Manometry is another investigation जो आपने मिस की, लेकिन वो confirm motility disorders.
कोई और क्वेश्चन है आपको? दूसरा जी सर। और एक मिनट, एक स्टूडेंट जी Sir, I have a question. बोलिए। सर ग्लोबस और डिस्फेजिया सेम होते हैं? यही मैंने क्वेश्चन भी पूछा था। Globus is only a sensation, or there is no difference between liquids and solids. So the difference between globus, it is a sensation, and there is no, it is not related to swallowing. In fact, may improve with swallowing. And dysphagia is actually difficult to swallow. It is only a sensation. There is no difference between liquids and solids. If dysphagia is एब्सोल्यूट भी हो सकता है, विद लिक्विड हो सकती है, विद सॉलिड हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्स्ट्रक्शन, बट इट इज ओनली सेंसेशन। उसका हाउ डू वी डिफरेंशिएट? इट इज नॉट रिलेटेड टू swallowing। हर वक्त एक सेंसेशन होती है कि मेरे सेंसेशन को स्टक अप है। इफ यू आस्क समबडी टू swallow, तो swallowing तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट विद dysphagia there is difficulty in swallowing, which is progressive initially with solids, progressive with liquids। और अगर न्यूरोमस्कुलर डिस्फेजिया होगा तो वो फिर कंटिन्यूस रहेगा, सेंसेशन नहीं, इट वर्सन्स विद swallowing। ये इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है विद डिस्फेजिया। और कोई क्वेश्चन? Assalamualaikum sir, I have a question. Sir, ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा पूछना था सर। सर इसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट क्या होगा? Like dysphagia का treatment depend upon the cause. So if there is a neuromuscular dysphagia, for example, in cardiovascular accidents, it is rehabilitation. And if it still persists, then we switch off for nasogastric tube or enteral feeding or feeding tube or peg tubes for feeding. We don't encourage oral. So for AML, neuromuscular disorders, Parkinson, if there is advanced dysphagia, where people are unable to swallow, we use initially we use rehabilitation. But if there is no improvement, we ask patient to use nasogastric tube or a percutaneous endoscopic gastroscopy peg tube. For achalasia, you can do dilatation for tight or lower esophageal sphincter, which is called pneumatic dilatation, or there is a surgery called Heller's myotomy. For strictures, you can do dilatation. For rings, you can do dilatation. You can treat gastroesophageal reflux disease by pharmacological therapy. For neoplastic disorders, if it is resectable, do surgery or radiation. If they're not surgical, we can use esophageal stents to improve dysphagia. Foreign bodies can be removed. Foreign bodies come with acute dysphagias, so we do endoscopy and remove the foreign body endoscopically. Generally, infectious esophagitis and pill-inducing esophagitis cause transient inflammation of the esophageal tract, which improves with time. So, the treatment depends upon the type of dysphagia. So, you need to diagnose the exact cause and then you treat. Sir, can you please upload the slides on Edmodo? Okay, इसको upload कर लेते हैं। दूसरा कर सकते हैं ये? सर यहाँ से तो नहीं होगी, एडमोडो फिर जाकर फिर करना होगा। सर अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेडिकल एजुकेशन से आप कांटेक्ट कर लें, वो करवा देंगे अपलोड। ठीक है, कर देंगे। और कोई क्वेश्चन है?